Hello, students, and welcome back to BankExamsToday.com. My name is Ramandeep Singh, and today I'm going to provide an important topic: cost of capital. See, students, calculators are allowed. 6 को exam है, calculators are allowed. That is why I'm doing this session. ठीक है, to help you understand कि what kind of questions would be there in your exam. ठीक है, cost of capital is very important. Basics याद करवा देता हूँ. ठीक है, see, there are various ways by which a company or an business can get money from the market. ठीक है, एक तो इक्विटी हो गया. ठीक है, इक्विटी, these are the shares, कॉमन शेयर्स होते हैं. ठीक है, एंड देन देयर इज डेट, एंड देन देयर इज प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, नॉर्मली ये तीन तरह का ही होता है. ठीक है, equity, they are like kind of, they are business owners, right? They are business owners. At the end of the day, whatever the profit or the surplus earned by the company, it is transferred to the equity shareholders as dividend. कुछ रख लिया जाता है as reserve, and rest of them is actually given to as equity. ठीक है, to the equity shareholders as dividend. ठीक है, बट यहाँ पे एक केस है. बट टू द, इफ वी टुक लोन फ्रॉम बैंक, तो वो हमारा हो गया इंटरेस्ट कॉस्ट. दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट. वी पे डिविडेंड टू द equity shareholders and dividend to the preference shareholders, while we pay interest to the debt, debt holders. ठीक है, debt instrument holders जिससे लोन लेते हैं. And interest is a taxable expense. Interest is an expense. Dividends and dividends are not taxable expense. Dividend expense है ही नहीं, वो तो profit share किया ना. Interest is a taxable expense, right? So let's say if interest paid is 100 rupee, right? And then the tax rate is, let's say, 30%. Tax rate is 30%. You are actually saving that 30%. ठीक है, so this 100% is the interest that you have paid. The tax rate is 30%. So ये 30% जो है, that is the tax rate, right? तो ये आपने बचा लिया, right? To a point you saved. तो आपका at the end of the day क्या cost हो गया? Your cost is 70 rupees. Your at the end of the day your cost is 70 rupees. ठीक है, that's what you need to notice. ये आपने ध्यान में रखना है. ठीक है, whatever the interest that we are paying, that is a taxable expense. That is what, that is a taxable in a taxable expense. ठीक है, उससे आपका टैक्स बचता है, डिविडेंड से नहीं बचता. ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है. अगर आपको समझ आ गया तो हम आगे चलेंगे. प्लीज़ लेट मी नो in the comment section, in the super chat, if you are able to understand. I hope yes, you are, most of you are MBA, so आपको ये आइडिया ऑलरेडी होगा, राइट? पता होगा ऑलरेडी. ठीक है, so Rana Day, the PNB credit officer expected cutoff is 65 to 70. Okay, so Bank of India credit officer course, if you want to revise, we are providing 50% discount using the course code BOI50. The complete course for video classes, note, test series, everything, that's available on bankexamstudy.com. So we are adding latest test as well, and calculators are there on our test series. On screen calculators are there, जो आपको एग्जाम में दिखेंगे वैसे वाले अवेलेबल है हमारे पास. So simple question: debt, cost of equity, debt to equity ratio is given, tax rate is given, weighted average cost of capital. Exactly these kind of questions we are going to find in the exam. So one important thing: what is the cost of debt? What is the cost of debt? The cost of debt is 9%, but as the tax rate is 30%, that much is actually saved. 30% tax rate, बच कितना गया? 70%. ठीक है, so we need to find out the 70% of 9%. ठीक है, that is the final actually cost of debt. ये cost of debt हमारा जो actual effective cost of debt is 6.3%, not 9%. ठीक है, cost of, the cost of equity, what is the cost of equity, वो उतना ही रहेगा. ठीक है, cost of equity जितना भी था, cost of equity is 12%. ठीक है, ये था हमारा 6.3%, ये था हमारा 12%. Now one important thing: debt to equity ratio. So debt to equity ratio is 100. That means what? Debt is equal to 100. अगर debt 100 है तो equity भी 100 है. ठीक है, in case debt to equity ratio is 50%, in case, that means debt is 50% of equity. In case debt is debt to equity ratio is 33.33%, that means what? Debt is 1/3 of equity. Easy. चलो,
ये इक्वल है, दैट मीन्स व्हाट, ये जो वेट है दोनों का दैट इज हाफ हाफ, 50-50% हो गया ना, ठीक है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो इज 100%, दैट मीन्स डेट जो है वो अगर 1 है तो इक्विटी भी 1 है, दैट मीन्स दोनों का कितना वेट हो गया, तो ये भी हाफ हुआ, ये भी हाफ हुआ। इन केस डेट टू इक्विटी रेशियो इज लेट्स से 50%, अगर डेट 50 है तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये दैट विल बी 1, दैट विल बी 2, सो ये हो जाएगा 1/3 2/3, ठीक है। वेरी सिंपल, ये समझ के चलिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इक्वल, ठीक है, ये समझ लीजिए। इन केस डेट इज 33%, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 33.33%, एंड यू नो देन व्हाट, तब क्या होगा, डेट इज 1/3, ओके, डेट इज 33.33%, इक्विटी इज 100, नाउ यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ, इसीलिए कैलकुलेटर्स हैं, नाउ यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स टू फाइंड द आंसर्स, ठीक है। सो 6.3%, सो 3.15, ये तो सिंपल सिंपल 6 हो गया, तो 9.15% जो है योर आंसर्स। नाउ यू कैन गिव इट अ लुक, ऑप्शंस आर क्वाइट क्लोज, जो ऑप्शंस है वो काफी क्लोज हैं। व्हाई दे आर क्लोज, बिकॉज कैलकुलेटर्स आर अलाउड हैं, ठीक है। यप, मनीषा, वी आर एडिंग न्यू क्वेश्चंस, वी आर एडिंग न्यू क्वेश्चंस इन द एग्जाम, ठीक है। कैन यू फिल द आरटीआई टू नो द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग, ओके आई डू, ठीक है। Risk management topic, Sumit Ojha. Sumit, I have done PNB risk management course. Test series is also available. It's still available. You can take it, right? So उसके लिए अलग से करना is very very difficult, ठीक है। Question number 2, which of the following information is available? अभी फिर से debt to, यही important है, debt to equity ratio. If debt is 50, equity is 100. Debt to equity ratio, debt is 50, equity is 100. So if debt is 1, equity is 2, तो weight कितना आ गया, 1/3 2/3, ठीक है। याद रखिए, if debt to equity ratio, debt is 50, equity is 100, ठीक है। Now the case is very easy. अभी यहाँ पे cost of debt है हमारा, the cost of debt, how much it is, 12%, लेकिन टैक्स रेट वाला, हाँ, टैक्स रेट इज 30%, मतलब नेट निकालने के लिए 100% माइनस 30%, सो 70 आपका नेट हो जाएगा, ठीक है। सो 0.7 से कर लीजिए, सो यू विल गेट इट 8.4%, एंड द वेट गिवन इज 1/3, तो 1/3 हो गया ये। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, विद इन 2 लाइन्स यू कैन सॉल्व इट। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, 19%, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं इसका, ठीक है, लेकिन वी गॉट द वेट as 2/3, okay, so just do it and you will get your answer, ठीक है। तो simply आपको आपका आंसर मिल जाएगा, that is around 2.8 and this one is around 12.66 I guess, so 66451, ठीक है। 15.47% is your answer, ठीक है। Options would be quite close, options बहुत close होंगी because calculators are now allowed, कैलकुलेटर्स अलाउड है, इसलिए ऑप्शन बहुत क्लोज होने वाली हैं, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है। सो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ डेट, सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए। डेट अगर इफ डेट इज 50, इक्विटी मींस 100, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट इज 50% ऑफ इक्विटी, ठीक है। सो वेट अगेन 1/3 2/3 हो गया, सिंपल आपका, ठीक है। सो सिंपल रिपीटेड, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, राइट, because I need to, cost of debt, because this is very important question, ठीक है। You need to repeat, fifth question is totally different, ठीक है। Concept is same but question is different. So 11% is a cost, but tax rate is 35%. So the net, the net rate would be, the net uh, effective rate of debt would be 65%, ठीक है। So how much it is, 11 is there, 11 is there, ठीक है। तो 0.65 करना है इसको हमने, which would be 7.15, so डेट जो वेटेज है इसकी 1/3 है, ठीक है। एंड नाउ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15% and the weightage is 2/3, so just multiplied using your calculators, I'm using my calculator here, okay, use your calculators to solve the question, it is 2.343, आगे भी है, ये तो सिंपल 10 हो गया,
So 12.3833, this is the answer. ठीक है, 12.38 हंसो, we got the answer. ठीक है, very easy, very simple. ठीक है, question number 4, the same question, similar question. Firm's estimated cost of debt, preferred stock, common stock is given. ठीक है, in the beginning I already told you इसका cost दिया हुआ है, tax rate दिया हुआ है, and equal funding. Equal funding means what? जो वेटेज है, द वेटेज इज वन थर्ड एंड वन थर्ड. ये वेटेज बिल्कुल सेम सेम है, वन थर्ड है. ठीक है, सो डेट निकाल लीजिए, कॉस्ट ऑफ डेट. सिंपल, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन. कॉस्ट ऑफ डेट, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, आई कांट हेल्प इट. ओके, तो 13%, ये आपका इफेक्टिव रेट कितना हो गया? 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70, सो 0.7. ठीक है, 0.7 आ गया आपका. ठीक है, सो हाउ मच इट वुड बी? 9.1. यूज योर कैलकुलेटर्स. 13/7 का, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा हूँ, तो मेरा फंडा लग गया. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकाल लीजिए. ठीक है, सिंपल सिंपल. इट इज 17% एंड दिस वन इज 22%. ठीक है, सो ये 9.1 है, ये 17 है, 22 है. जस्ट फाइंड आउट द टोटल, क्योंकि इक्वल है, एंड डिवाइडेड इट बाय 3. ठीक है, यू विल गेट द आंसर 16.03. ठीक है, अराउंड 16. So B is your correct answer. Question number 5. If now it's your turn, solve this question yourself. If you are able to understand the concept, then this would be a piece of cake for you. Very easy question. Uh, Please pause the video and solve this question yourself. But still, I need to solve it for rest of you, because नहीं तो मुझे comment में आगे पूछेंगे, sir solve कर दो, solve कर दो. Now I need to do this. AF company has debt to equity ratio. Again, वही debt to equity ratio वाला फंडा. Debt is 60% of equity. Now your calculators would be, your help. वही help है. Debt is 60, equity is, if debt is 60, equity is 100. So 3, 5. So 3/8 इसका weight हो गया, 5/8 इसका weight हो गया. ठीक है, we got our weights. Okay, so cost of debt. We got cost of debt, cost of equity. ठीक है, solve it yourself, students. There is no point of watching videos and not solving the questions. ठीक है, so the cost of equity, कहाँ पे है? The cost of equity is 17%. Cost of debt is 12.5%, but we need to give the tax का impact. ठीक है, so it is 0.6% आ गया, क्योंकि 40% है, तो इफेक्टिव निकालना, तो 100 माइनस 40, तो 60% इफेक्टिव है. ठीक है, तो 0.6. So it becomes, use your calculator, students. Use your calculators. I'm also using my calculator right now. I'm not a supercomputer. So the weights are here. ठीक है, so just find out the answers. ठीक है, use your calculators to find out the answers. It is 3/8 of 7.1. So it is how much it is? It's around 2.8125, and this one is around 10.625. 10.625. So easily you can find it out. Okay, 13.4375%. So 13.4. B is the correct answer. B is the correct answer. I hope you got the correct answer, students. Everybody. Yep. So that's all, I guess. So if you are free, please arrange 2 classes daily. No, I can't. Sorry, Shweta, I can't. Bank of India credit offset 2020 course. In the paid course I'm doing it. Please watch my paid course. I have already cleared all the concepts for the numericals. There are some chartered accountants in that video, but obviously you don't need it. But yes, if you like the class, you can join the full course. Use a coupon code BOI50, even for the chartered accountants and all the CFAs, chartered accountants and intelligent people. At least take the test series. That is very important. That will boost your morale. And many of you have never used the on-screen calculators. ठीक है, you'll get an experience how it is actually. I mean, using on-screen calculator is actually not an easy task. So video classes, notes, test series, recorded sessions, entire syllabus is covered there. 5 full-length tests are already there. Plus, we are adding 3 new tests with the latest questions with the help of using calculators. These 5 questions are from the test series itself. 15 sectional quizzes for professional knowledge.
Links are available in the description. Even for the financial awareness, we have the latest content most relevant for the exam. Even in these 5 days, you can boost your scores by 15 to 20 marks. I can guarantee you, whoever is giving 4 to 5 hours every day for next 5 days to my course, at least 15 to 20 marks would be boosted. इतने marks बढ़ जाएंगे. I can assure you, I can guarantee you, actually I can guarantee you, these are the kind of question. Today I taught you just one question, and I promise you, you will find this question in your exam. Mark this video, come back on the exam day and let me know कि ये question आया कि नहीं आया. See, I can guarantee you, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा. आई कैन गारंटी यू इनमें से, और ये वाला आएगा. बताइए, फिफ्थ वाला. आई कैन गारंटी यू टुडे ये वीडियो देख के यू गॉट 1 mark. See, you got 1 mark. And कल फिर आइएगा. कल come back tomorrow. I'll give you 1 more mark. So, list of students who cracked Bank of India Credit Officer exam, Vijaya Bank Credit Officer exam. Subscribe to my course and subscribe to this channel and like this video. That's really important. And stay updated and follow me on Telegram. All the links are available in the description. And watch my previous video. कल वाली